Namaste mentors, my name is Ketan. Today we're going to talk about Vedica Scholars Programme. This is basically on students' demand. A lot of students have requested, कि sir, there is this college Vedica Scholars Programme and it's looking good. We want to know more about it. इसका future growth क्या होगा? Who should be doing this kind of program? What sort of profiles will be offered? क्या fee structure है? क्या program structure है? So in this video, for the next 10-15 minutes, I will be talking about Vedica Scholars Programme in a detailed manner. It's one of its kind program, by the way, preferring women, candidates. So it's the only B school that is basically preferring the women candidate as of now. But yes, even if you're a male candidate, you can watch this video maybe for your acquaintances or your colleague or probably for your relatives. Now, बिफोर वी मूव हेड इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. अगर आप थोड़े से स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखते हो, 150 फैकल्टीज है, दैट्स अ ग्रेट नंबर. देन यू हैव 200 शैडो मेंटर्स. शैडो मेंटर्स क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे. 75 प्रोग्राम मेंटर्स, अगेन ग्रेट, एंड 144 गेस्ट स्पीकर. एक चीज़ मुझे इनकी बड़ी यूनिक लगी, इनका जो करिकुलम है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ the sort of orthodox methodology or conventional or traditional methodology of MBA plus what is required in the today's era, by the way. ठीक है, तो ये modern and the orthodox दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लब करके चलते हैं. अब इसका मतलब क्या, कन्वेंशनल का मतलब क्या, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स MBA का मतलब क्या. 4 मॉड्यूल हैं इनके बेसिकली, विच इज मास्टरिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, लर्निंग फ्रॉम द लिबरल आर्ट्स, थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिंग फॉर इम्पैक्ट, and taking charge of personal growth. Okay, now let's break this down into 4 pillars as such. Number 1, mastering management practice. इसका मतलब ये है, though this program is basically caters to what is happening in the current world, it also gives you a very good flavor of marketing, finance, operations and HR. So even if you are somebody who will be learning liberal arts and all that stuff, आप बेसिकली पढ़ोगे मार्केटिंग फाइनेंस क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल बी स्कूल में होता है 2 साल के लिए. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यार आपको ये चीज़ें भी पढ़ाई जाएगी. अब मैं थोड़ा बात करूँगा लिबरल आर्ट्स के बारे में. जहाँ तक लिबरल आर्ट्स का सवाल है, व्हाट एग्जैक्टली इज लिबरल आर्ट्स? लिबरल आर्ट्स इज अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग योर स्टेक होल्डर्स साइकोलॉजी. ये HR, मार्केटिंग, फाइनेंस के लिए भी काम करता है. Then there is a third domain which is called as thinking and communicating impact. So how do you communicate? How do you pass on the message to your stakeholders? Or how do you convince your audience? Something like that. तो मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे, it's a beautiful program blend with these 4 main pillars जो इसको थोड़ा unique बनाता है, because not every other B school out there is actually going ahead with this. So that's the good thing about it. आगे चलेंगे वेदिका स्कॉलर के बारे में. अगर थोड़ा बात करें प्रोग्राम के बारे में, सबसे अच्छी चीज़ है 18 महीने का प्रोग्राम है. इट्स ओनली 18 months program. You don't really have to wait for 2 years of program, which is basically a traditional or a conventional program, by the way. So yes, you have a postgraduate program in management practice and leadership. This is what you'll be getting. Duration 18 months. It's a completely residential program, by the way. इसकी जो fees है वो 11.75 lakhs plus taxes है after scholarship. There are scholarships also. You can check them out on the website, or probably you can get in touch with the B school and ask them for the details. Fine. So that's number 1. अगर मैं इनके founders के बारे में बात करूँ, अनुराधा दास माथुर मैम जो है, she's the founder and dean of Vedica Scholars Programme, and she's also founder and director of 9.9 Media. See, it is always good to have women leadership, because this entire program is designed like that. So that's a great thing. Then we have the next founder, which is Pramat Raj Sinha. Sir is basically the founding dean of ISB. That's a big thing. So when you have these kind of founders, when you have this kind of leadership for a particular B school or for a particular program, it always gives you new flavor, and it always helps you to learn some good things that are happening currently in the market. ये थोड़ा बहुत इनका uniqueness है. They have a world class faculty, by the way. They claim that they have faculty from leading institutes like Harvard, Stanford, Yale, McKinsey, Coca-Cola, and something like that. Also, we talked about liberal arts, so they have a good integration with liberal arts. Focus on women's leadership, definitely. A short placement and career support. Okay, that's every B school would do. Emphasis on personal growth. This is something we can talk about. So here, what they are focusing a lot on is basically developing yourself. I was going through some of the YouTube videos on Vedica, wherein they have interviewed their entire sort of students and all that. You can see that on their website also. यहाँ पे I was seeing that some notification was going out there. हाँ, ये देखो यहाँ पे my journey from Vedica to Google, right? इसके बारे में बात करेंगे. So overall ना एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई है कि once you get into the B school, you are a different person, and when you come out of the B school, you are a way different person, because the way they shape your personality, the way they help you to focus more on yourself, get open up,
and get ready for the outer world, which is the corporate world, I would say. I think that is really really fantastic as far as Vedica Scholar Program is concerned. And मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको छोटा सा बैकग्राउंड दूं यहाँ पे, so guys nowadays अगर आप देखोगे, lot of corporates, lot of multi-million-dollar companies are now looking forward for having women leadership. Definitely, indeed, it does help to the companies to grow, right? तो उसके चलते मेरे ख्याल से ऐसे जो यूनिक प्रोग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एक्चुअली एक अच्छा वैल्यू ऐड भी है. इफ यू आर समबडी हु इज रियली नॉट लुकिंग आउट फॉर just learning HR, just learning finance, just learning marketing, but you really want to have a holistic approach towards management, you want to open up yourself and try a couple of more things like liberal arts and all that, I think this program is very much suitable for you, because there are candidates वो कहते हैं कि हमें ट्रेडिशनल वे में तो पढ़ना ही है, but हमें कुछ नया करना है, हमें something we really want to do something which is really cool. So these kind of programs are definitely there for you. Now let's talk about a very unique concept that I found at Vedica Scholar. This is something called as there is a basically 8 weeks program. Out of those 18 months, आपके 2 महीने जो है, you will be mimicking or acting as an EA to a CEO, right? ये रोल होगा आपका, जहाँ पे the CEO, जैसे यहाँ पे हो गया, अगर आप देखोगे प्रीति रेड्डी मैम was the CEO of South Asia, right? You guys will be interacting with these people and you will be kind of acting as an EA to CEO. ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा के जाएगा, because when you get shadowed by CEO, CFO, or maybe a top leadership person, it gives you a lot of exposure. So I think this is something really really good, right? We can go through a couple of more details यहाँ पे. अगर हम बात करेंगे मेंटर्स के बारे में, मेंटर्स भर के है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटर का सपोर्ट मिलता है. अगर मैं बात करूँ एडमिशन के बारे में, इनका राउंड 4 जो है वो अभी तक ओपन है. Now let me give you a quick idea about the program. Number 1, the program is not AICTE approved. Number 2, they are not looking for any sort of entrance examination and aptitude and all that. तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों, जहाँ पे वो कहते हैं कि सर देखो यार आई एम नॉट ग्रेट एट एकेडमिक्स, और प्रॉब्ली आई एम नॉट ग्रेट एट एप्टीट्यूड, आई वोंट बी एबल टू गेट 90-95% इन कैट, बट यहाँ तक मेरा प्रोफाइल कंसर्न है, I have great profile, I have been 777, या फिर I have done a lot of extracurricular, co-curricular. I love to meet people and I love to conduct a lot of seminars and so एक versatile personality जिनका होता है, उनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, because there is no entrance exam, so they will be taking your personal interview and there will be a behavioral interview मेरे ख्याल से. So this is what is making this entire program little bit unique, और ये होना भी चाहिए, because again not everybody is really good at aptitude, but there are a lot of people, though they are not good at aptitude, they are very good with academics and their personality, out of the box thinking and the kind of presentation and all that stuff, right? So ऐसे बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं यहाँ पे. अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट प्रोसेस का, guys इनकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है. अगर आप देखोगे, there are students, they have made it to Google, they have made it to BCG, they have made it to all the top notch companies in the country. Now, before I move ahead, let me give you a little bit idea as to what sort of roles you will be getting. एक बार नंबर देख लेते हैं इनके प्लेसमेंट का. So guys, batch prefer and placement will do simultaneously. Freshers versus work-ex. Okay? अगर हम बात करेंगे बैच साइज के बारे में, 115-120 का इनका बैच है. The batch size is not going to be a problem at all, right? There is a beautiful combination of fresher and work-ex, both type of students. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ freshers जाते हैं, even work-ex वाले अगर आप बच्चे देखते हो, वर्क-एक्स वाले बच्चों को भी ये एक ऐसा यूनिक चीज़ चाहिए, बिकॉज सीखने को यहाँ पे बहुत मिलता है. अगर मैं बात करूँ तुम्हारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, सो गाइस इंजीनियर्स 24%, डेफिनेटली आर्ट्स, कॉमर्स एंड नॉन इंजीनियर आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज द प्रोग्राम इज डेवलप्ड इन सच अ वे. जोग्राफी के बारे में अगर हम बात करेंगे, 60% कम्स फ्रॉम नॉर्थ, बिकॉज दिस इज अ दिल्ली बेस्ड बी स्कूल, बट मुझे नहीं लगता जोग्राफी कुछ मैटर करेगा. आगे चलेंगे, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे. गाइस ये प्लेसमेंट जो है बाय this is as on 18th April 2022. This is the latest wala cheese, right? It's a latest report, so we can able to we'll be able to understand 99% placement हो चुका है. Again, not bragging about it or not exaggerating it. 99% बकायदा बाइज्जत इन्होंने बोल दिया है कि भाई हमारा 99% का प्लेसमेंट हुआ है, which is a good number. Average 9.07. अगर मैं कैलकुलेट करूँ फटाफट से, 9.07 is आपका एवरेज, 11.50 और 75 is your fees. मेरे ख्याल से ROI इज़ वेरी गुड. अगेन अगर आपका एवरेज 9 lakhs पे जाता है, मतलब यार आपका हाईएस्ट 15 के ऊपर होगा, राइट? तो जहाँ तक हाईएस्ट का सवाल है, हाईएस्ट इज 16.5, 16.5 लाख की इनकी हाईएस्ट पैकेज है, बहुत अच्छी है. दूसरी चीज़, इन्होंने और एक बाइफर्केशन दिया है. उन्होंने ये कहा है कि 14 लाख इज़ फॉर फ्रेशर,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्किंग्स वाले बच्चे यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट ले रहे हैं. When there are freshers, they are actually nailing it, which is very good. Average CTC for fresher is 8.53 lakh, fantastic. Average CTC for workx is 9.45 lakh, again good. Median CTC is 8.5, that's a decent thing, right? आगे चलेंगे. इन्होंने थोड़ा सा बाइफर्केशन दिया है. फंक्शनल एंड इंडस्ट्रियल स्प्लिट के बारे में बात करते हैं. कंसल्टिंग एंड एचआर, आई वाज अबाउट टू से दैट, बिकॉज जिस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन करा गया है, एक ओवरऑल अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हो इस पूरे प्रोग्राम की, तो डेफिनेटली वो कंसल्ट एचआर के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा. एचआर इज डिफरेंट, कंसल्टिंग इज डिफरेंट. कंसल्टिंग कैन हैव मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस एज वेल, राइट? आगे चलेंगे. ई कॉमर्स में प्लेसमेंट हुए हैं. वाओ, बीएफएसआई में 22% है, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. एफएमसीडी में 8% है. IT is 6%, healthcare 6%, and others 11%. Great. Let's talk about the functional split now. I hope आप देख पाओगे मेरे ख्याल से. Functional split के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो guys अगर यहाँ पे देखोगे, business development and sales is 40%, research is 16%, marketing HR is 14%, only HR is 11%, marketing and PR by the way, strategy is also there 10%, consulting 9%. Genman 8%, Operation 7%, and Fin 7%. Not that bad, absolutely. Okay, मैं भी कुछ highlights दिए हैं. Vedica's average salary increased from 8.10 to 9.07 this year, inching back to pre-COVID average of INR 10.2 lakhs. Okay, तो इनका pre-COVID INR pre-COVID इनका 10.2 lakhs का एवरेज था. सो मुझे नहीं लगता इनको ज़्यादा तकलीफ होगा इसको शूट करने के लिए. मे बी दे कैन क्रॉस दिस इन द ईयर 2022. मे बी दिस कैन टच 10.5 और मे बी 11. सो ओवरऑल अगर हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, जहाँ तक वेदिका का कंसर्न है, द प्रोग्राम इज कंसर्न, ओवरऑल मुझे प्लेसमेंट बहुत सही लगती है. देखो यहाँ पे भी आपको डेजिग्नेशंस मिलेंगे. कंसल्टिंग वी टॉक्ड अबाउट, मैनेजर टू सीईओज ऑफिस, ग्रेट. देयर आर सम ऑफ द दीज आर द प्रोफाइल्स जो एक्चुअली कभी कभार ब्लैकीज वगैरह पे चली जाती है, आईएम्स वगैरह में चली जाती है, वो भी आपको यहाँ पे मिलता है. यू विल बी गेटिंग वर्क एज एनालिस्ट, एसोसिएट, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर. दिस इज समथिंग रियली गुड, शुड लुक आउट फॉर. सीनियर एग्जेक, एचआर मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, okay, creative producer. So overall if you look at placement wise, they look good. As far as the fees is concerned, looks good. The overall program, the kind of a design and the features of the program looks good. So guys, definitely if anybody who strive to kind of do this kind of program which is a little unique, I think you can go ahead with that. Durga Bure class 2017 Nestle. So एक बार इनका जर्नी लेते हैं. 14 BTech, सॉफ्टवेयर डेवलपर TCS, 16 वेदिका प्रोग्राम 17, चैनल एग्जीक्यूटिव नेस्ले 2018, एट नेशनल ऑपरेशंस लीड, रेलवेज की अकाउंट्स नेस्ले. दैट्स अ ग्रेट ग्रोथ. हाँ, 2017-18 मतलब एक साल में जॉब लग गया. And 2019, I think she has done a fabulous job. So guys, take a look at this program. It's a nice program. Think about yourself कि अगर आपको चलना है कि नहीं चलना है. I hope I have covered everything as far as the program is concerned. Again, no entrance exam. It's just the PI that they're looking for. Fine, fabulous program, great program. अगर आपको कुछ doubts है, concerns है, मेरे ख्याल से you can shoot an email to Vedika, and there will be a lot of people to help you out from the B school itself. So guys, that's it from my side. Thank you so very much. Take care of yourself. If you have any question, put the comment on the video. I'll be more than happy to help you. Take care. Bye bye.